Okay, ji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Starting with the name of Almighty Allah. So we can see that I have a worksheet right in front of you. It's statistics past paper questions 4024, and it's a worksheet, and the past paper questions are from. You can see that the code 2022 October November, and it has all the statistics questions of 2022 and 2021 and 2020. Okay. So one by one, I'll be explaining the questions along with all the concepts involved in it. Question. It is question number 2 in October, November 2022. It's the latest past paper we have it right now. Okay. So first of all, reading the question is very important. So I'm talking very slowly so that you guys can understand the question. They say that Marco grows two types of tomato plants, type A and type B. He counts the number of tomatoes growing on each tomato plant. The results for type A plant. Okay, this is type A plant result. Okay, that number of tomatoes on plant is 17, and there are 5 plants like that. ठीक है, फिर जिस प्लांट के ऊपर 18 टोमेटोज हैं वो दरख्त उसके पास 2 हैं, 19 टोमेटोज वाले 7 हैं, एंड 20 टोमेटोज वाले 3 हैं, एंड नंबर ऑफ टोमेटोज ऑन प्लांट 21, तो 21 टोमेटोज वाले 2 हैं, एंड 22 वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके पास प्लांट मौजूद है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ. Calculate the mean. As we debated a lot on mean, that mean is summation fx divided by summation f. इसको average बोलते हैं. If we have a frequency, तो frequency हम लोग कुछ इस तरह करते हैं. आप में से एक बच्चा कैलकुलेटर बिल्कुल रेडी रखे. We know that this is my f part and that is my x part. So fx would be 17 times 5 is, can you please tell me? 17 times 5. बेटा एक बच्चा mic on कर ले and tell me the answers. 85. It's 85. 18 times 2 is 36. 17 times 9, 19, sorry, 19 times 7 Sir, is 17 into 5 is 17 into 5 is 85, no? 17 into yes, sir. Okay, 18 into 2 is 36, 19 into 7 is 133. it's 133. 20 into 3 is 133. 60. Okay, it's 60. 21 into 2 is 42, and 22 into 1 is 22. Now it's summation fx, so we'll add all of them. 85 plus 36 plus 133 plus 60 plus 42 plus 22. The total frequency is, we know that there are total some plants, so we have to add the frequency as well. That what total frequency is? Frequency is 5 plus 2 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1. Please use your calculator efficiently and tell me what is the answer for the numerator and what is the answer for the denominator. 133 plus 60 plus 42 plus 20. So the answer for the numerator is 376, and the And for the denominator denominator is 20. okay, so 376 divided by 20 is 18.8. Right everybody, समझ आ गया? Yes, sir. Kashif, Mahmood, Ahmad. Okay. Now in this question, we have calculate the range of the question. So range is beta highest minus lowest. Highest minus lowest. So highest number of tomatoes is 22 and the lowest one is 17. So 22 minus 17 is 5. 5 is the answer. Is this clear everybody? It Yes, was in sir. paper 2 for 2 marks and this was in paper 2 for 1 mark. So they say that, now it's a question. They say that the mean number of tomatoes per plant for the type B is 17.1. So remember that. Remember that we have for plant A, we have 18.8. And the range is 8. And the range is 8. But the range for plant A is 5. Make 2 comments comparing the number of tomatoes growing on type A and type B. So we can say that easily that number of tomatoes on plant A is more than
plant B. Because the mean on average 18.8 tomatoes plant A में बन रहे हैं, लेकिन plant B में type B के जो plants हैं उसमें 17.1 बन रहे हैं. Okay, the range. Okay, the second is of the range. We can see that there is less variety in plant A, but variety in the range in plant B is much more than that. So we can say that we have we have lower range lower range in plant A than plant B. Means plant A is more consistent. ठीक है जी. प्लांट ए जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है प्लांट बी से. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सो सर दिस अगर वाज. हम सिर्फ ये लिखे कि मतलब ए का जो रेंज है वो ज़्यादा है बी से। हाँ, तो आपने साथ एक्सप्लेन भी करना ना कि क्या बता रहा है. रेंज जब ज्यादा होगा जाहिर सी बात है, तो एक टोमेटो जो होगा एक टोमेटो फॉर एग्जांपल 30 हो सकता है, तो दूसरा फिर 22 होंगे. ठीक है, 8 का मतलब ये होता है. इज दिस क्लियर? लेकिन वहां पे रेंज ठीक कम है, मतलब वहां के प्लांट्स जो है ना ऑन एवरेज एक पे 17 निकल रहे हैं तो दूसरे पे 22 निकल रहे हैं, तो इतना फर्क नहीं है जितना 30 और 22 में है फिर. ठीक है. ठीक है सर। Now they say that Marco also grows strawberry. It was the part B of this question. Now that's the question having cumulative frequency curve. Marco also grows strawberry. He record the mass m gram of 120 strawberries, and so it means that the total frequency is 120. Is this clear, everybody? Right, Ramsha? Okay. Now we have to draw the cumulative frequency diagram to represent these results. So CF is, you have to write the first one as it is and then add with that. 15 plus 38 is what? 15 plus 38 is 53. 53 plus 45 is 98. And 98 plus 17 is 115. And 115 plus 5 is 120. So महमूद देखो आखिर में रिजल्ट 120 आना चाहिए. ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी जितना सेम. So same, so means correct. Means correct. Is this clear, everybody? Yes or no? यस सर। Okay, now we have to plot it. So now on 10, I'll be plotting 15. So let's see, go down. Wait a minute, let me just turn off this draw with finger option. Okay, so we have to go down. So 10, so we have to plot 15. So 10 is 15. 15 is right in the center of 10 and 20. And then we have 15, 38. So 15 and 38 is one block down, then 40. And 20 and it's no, it's not 38, it's 53. Mistakenly, look, I plotted 38. That was not a good option for me. So on 15 I have to plot 53. 53, so 50, 52, 53 would be right in the center. Okay, 20, it's 98, so 98 would be one block down, then 100. And 25, it's 115, is right in the center between 110 and 120. And the last 30 is 120, so that is my last point. So to draw the cumulative frequency curve, we have to start from this and we have to make it like a curve. देखें ये यहाँ पे तो मुश्किल थोड़ी सी होती है मुझे पेंसिल के ऊपर, लेकिन आप लोगों को पेपर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पेंसिल ऐसा नहीं होता. ठीक है, स्मूथ बनाने की कोशिश करें, क्रॉस के बिल्कुल सेंटर से लेके जाएं. देखें जैसे मैं एक सेंटर से लेके जा रहा हूँ. Okay, once it is done, now they say that Marco uses strawberries with a mass greater than 21 grams to make a jam. Use diagram to find an estimate for the percentage of the strawberry he uses to make the jam. So percentage is part divided by total. Total is 120 multiplied by 100. We have to see the part. So mass greater than 21. So mass is on the x-axis. I can see that very clearly. So I'm gonna pick a line from x-axis. That is what my 21 is. I'm gonna hit the curve like that. I'm going to just check the answer on the y-axis, that what y-axis answer is. I can see that it's 102. It's 102. Do you agree with me, everybody? So यस सर। greater than 21 grams. So 120 minus 102 is
18 strawberries they are used to make the star jam. So 18 out of 120 multiplied by 100 is what, beta? Can you please tell me what is the final answer? G, what's the answer? Ramsha, what is the answer? 15%? 15. Very good. So it's 15%. For example, we can also get a question in this, that what is the median of this data? Median. So median is 50%. So 50% means 50% of 120. So it's the 60th value. So 60th value on the y-axis. So 60th value on the y-axis is median mass of the strawberry is 15.5. Do you agree with me, Ramsha? Yes. Okay, that's very good. Okay, we also have interquartile range in this question. Interquartile is upper quartile minus lower quartile. Hurera, I hope you're doing good. Upper quartile is mera bacha, it is 75% of the data. So 75% of 120 is how much? 90th value. So let me check the 90th value, that what 90th value is. So I have to hit the curve like that. So going down and seeing that what's the final answer. So it's a bit hassle here. So according to me, it's 18. अच्छा line थोड़ी सी इधर हो गई है तो it's 18. Sorry, it's 19. ठीक है. So upper quartile is 19. Let's see what is lower quartile. Lower quartile is how much percent बचा? 25%. Agree or not? 25% of the 120 is 30th value. Hurera. So 30th value y-axis पे आप hit करें curve के साथ like that. और फिर नीचे जाके देख लें कि आंसर क्या आ रहा है. मेरे पास नीचे जो आंसर आ रहा है दैट इज 10 11 12 12 आ रहा है आंसर मेरे पास. तो इंटर क्वार्टाइल निकालनी हो तो अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 7. तो ये हमारे पास 7 ग्राम्स का जो है ना दोनों के दरमियान में डिफरेंस है. यू कैन सी दैट हो रहा कि ये 7 ग्राम्स हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. द गैप बिटवीन द टू ग्रीन लाइंस. कैन यू सी दैट इट्स अ 7 ग्राम? कैन यू सी दैट? से यस और नो? अहमद समझ आ रही है मेरा बेटा? काशिफ? Yes, sir. Okay, it's a past paper question from 2022. Let's move. Okay. Okay, 21 October November it has a scatter diagram. So scatter diagram क्या होता है? बहुत आसान चीज है, इतना मुश्किल नहीं है, यार जी पढ़ा देता हूँ. ठीक है, ये उस दिन मुझसे पढ़ाना रह गया था. The table shows the ages and height of the 10 boys. Okay, so we can see that complete a scatter diagram. The first 6 points have been plotted for you. Okay, thank you. So 13 is 158. So I'm going to use red. 13 is 158. So 13 is right in the center, right? So 158 would be somewhere here. So just cross it. So I'm gonna take it. 17 is 175. So 17 is right between 16 and 18. So 175. So right in between the 180 and 170. So I'm gonna take it. So 13 is 150. So 13 is 151 again, once again. So 150 is like that. And then we have, I'm going to take it. Then we have 16 160. So 16 is 160. So 160 is right there. Look at everybody, if your data is flowing like that, so it's a positive correlation. Okay beta, it's a positive correlation. एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही होती है. एंड अगर आपका डाटा जो है ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा हो, सो इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन. लेकिन अगर आपका डाटा जो है कुछ इस किस्म का हो कि ना ये समझ पड़े कि नीचे जा रहा है और ना ये समझ पड़े कि ऊपर आ रहा है, सो देन देयर इज नो कोरिलेशन. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? इज दिस क्लियर? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम सो फार? हुरैरा, रमशा? No. Okay, then they say that draw a line of best fit. What is the line of best fit? It's a line which will show the data pattern. I know that if I draw a line like that, I'm nothing just an idiot because data is not going this way. So I have to rotate my ruler in this direction. Okay, so to draw a correct line of best fit, you have to count the values. I can count the values. I have 6 black points and 4 red ones. So the total are 10. आई हैव टू ड्रैग अ लाइन कि अगर लाइन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट से पास भी हो जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए दोनों साइड्स पे लाइन की.
So for example, let me just pass the line with one of the points like that, and let me show you that what that is. Like for example, this is my line of best fit. So let's see how many points there are. 2 points on the upper side of the line, and there are 1 2 3 4 5 6 points on the lower side. So it's not a correct line. So I'm going to erase it once again. So let's rotate a ruler a bit. Okay, and let's try our level best so that we can leave equal number of points on both sides. Equal number of points on both sides. So let's see. I can see that I left 4 points on the downside, and there are only 3 points on the upper side. So I have to rotate it a bit more in order to draw the best one. Let's see. I think that's perfect because I have 5 points on the right side, but 4 points on the left side. So it is the one of the best line. We can see that it's a line of बेस्ट फिट के देखें लाइन के ऊपर भी आपके पास 4 पॉइंट है और लाइन के नीचे सिर्फ आपके पास 5 पॉइंट है लेकिन एक पॉइंट जो है वो लाइन के इतने करीब है कि हम लोग उसको डाटा से निकाल सकते हैं इज दिस क्लियर एवरीबॉडी ये आपकी माइंड पे डिपेंड करता है कि वो लाइन आपने कैसे लगाई है इज दिस क्लियर एवरीबॉडी यस और नो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट से पास हो जाए अगर पास ना ही हो रही हो तो इक्वल साइड पे इक्वल इक्वल छोड़ देना पॉइंट्स इज दिस क्लियर एवरीबॉडी Yes, sir. okay now we have to use your line of best fit use your line of best fit to estimate the height of 14-year-old boy okay so 14-year-old boy is here so let's hit it so the answer is 158 centimeter so the answer is 158 centimeter. So we'll get 1 mark for that, 1 mark for that, 1 mark for that. Simon is 22 years old. Explain why your line of best fit should not be used to estimate its height. So he is 22 years old because if I just lift a line and the line is not touching the red line. Okay, is this clear? Yes, sir. Because we don't have data greater than 16. Can you see greater than 18? Sorry, 18. Greater than 18 years. Greater than 18 years old boys. Is this clear, everybody? Yes or no? Because the highest age in this data is 18 years old, and we don't have any data greater than 18. So that's the reason I cannot predict anything about that. Is this clear, everybody? Yes, sir. Okay, let's see. Okay, we get a next question, and it is from 21 October November 22, paper 2 1 October November 22. Work out the percentage of the girls who are taller than 145. So percentage is part divided by total multiplied by 100. I can see that there are 180 girls, और अगर आप लोग इनको add कर लें तो we'll get 180. So please look at the table and tell me what is the answer for that. Greater than 145. Greater than 145 is this area. Yes or no? So I have to add 62 plus 24. So 62 plus 24 is how much? 86. So Ramsha, 86 out of 180 times 100 is the answer. So tell me what is the final answer? I think it's 47.8%. Please review it again. एक दफ़ा दोबारा कर लो खैर 62 plus 24 is 86 divided by 180 yeah it's 47.778 so we have to give the answer till three significant figures so this is what my third significant figure is so 47.8% is my final answer is this clear everybody calculate an estimate of the mean so we know that how to find out the mean of the data because mean is already debated a lot so mean is summation fx divided by summation f so we in this data we have the summation f that is 180 girls but its frequency the x is missing so I'm gonna find midpoint
सो काशिफ ऐसे क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकालते हैं तो 125 और 135 का मिड पॉइंट क्या होगा? एड 130. 125 plus 135 divide by 2, so the center point is 130. महमूद, सेकंड का क्या होगा बेटा? 137.5 होगा, फिर इसका होगा 142.5, इसका होगा 147.5, 147.5. ओके, इसका होगा 155. 55. Noor, can you hear me? I hope you can. fx is 130 times 8 is what? अहमद, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे. It's 1040. 137.5 times 31. हुरैरा, तुम्हारी भी आवाज मुझे नहीं आ रही है, क्यों? 142.5 times 55, it's 7837.5. ओके, 147.5. देखें कोई गलती हो जाए तो आप लोग जरा पकड़ लें प्लीज. 9145, और फिर आता है 155 times 24, so the answer is 3720. So we'll just select this and we have to add this. तो हमें इसको add भी करना है, तो let's select this. So please add all of them in the numerator. Numerator पे सबको add कर दें please. And divide by 180. So what is the answer? What is the answer बच्चा? रमशा, आंसर बता दो बेटा. हुरैरा, can you hear me बच्चे? सर न्यूमरेटर में 26365 आ रहा है. 26 365. divide by 180, और आंसर क्या आ गया बच्चे? Let me check. 26365 divide by 180. I got It's 146.4. 146.47. Very good. So it's 146.47. So I'm gonna show it examiner here. So but still I'm gonna write here 146, the three significant figures. Okay. So this is what my final answer is, but I'm giving the answer into three significant figures. Is this clear? Okay. For example, in this question, they are not asking for the median, but still I'm going to show you that how to find out the median of these questions. So we can see that the data is even. As data is even, so data is even, it means that we have 180 girls and it is even number. So n divided by 2 is 180 divided by 2 is 90th value. So 90th value ke liye we have to check the class where we have 90th term. So for that I'm going to erase this fx point of view here. I'm going to write cumulative frequency. So CF is, first one is 8, 8 plus 31 is 39, 39 plus 55 is what? 39 plus 55 is 54. 94. Okay, I got my 90th value, and 90th value, it lies in this class, which is 140 to 145. Do you agree with me? Yes, sir. So 140 to 145 is my median class. Okay, Ramsha, which one of the following is the modal class? Means mode कहाँ पर होगा? Most repeated data कहाँ कहाँ पर है? जरा देख लो please and tell me. 145 to 150. 145 to 150. Yes, very good, because it has the highest frequency. Is it clear? क्लियर है मेरा बच्चा? सबको क्लियर है? Yes, हाईएस्ट sir. फ्रीक्वेंसी, ये सारे आपके नोट्स जो है ना बन जाएंगे. तो बस आप लोगों ने ये क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है कि कल को मैं अगर ना भी हूं तो आप लोगों को ये सब चीजें आ जाएं. ठीक है जी. रेंज इज highest minus lowest. So highest height is 160. Agree with me? Minus the lowest height is 125. So 160 minus 125 is what? 35. So 35 is centimeter is the range of the height in the girls. Is this clear, everybody? So that's Yes. okay. Now we have the question, and it is related to a bit of pie chart. But still, I'm going to solve this question. And they say that a five-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4, 5, and the table shows the results from the spinning the spinner 200 times. A pie chart is drawn to show the information, calculate the angles representing the number. We know that a pie chart is total 360. Agree, everybody?
And the number Yes, sir. 4 is number 4 we have only 35. So sector angle for 4, sector angle would be, sector angle for 4 is 35 out of 200 times 360, because total pie chart is 360. So 35 divided by 200 divided by 63. 200, so that is 63 degrees. Very good, thanks. Now they say that estimate the probability that the spinner lands on 3. So total probability is that there are total 200 chances, and out of 2 the spinner is landing on 3 is 28. So 28 out of 200 is the probability that the spinner will land on 3. So 28 out of 200 is 28 out of 7 by 2. 50. It's 0.14 or 14%, और 7/50 सेम थिंग है, ठीक है। ओके, चलें ये अब छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का है, तो ये हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में कर लेंगे। अच्छा जी, ये मीन, ये अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन आपको करा देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हुआ है, उससे फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ना अभी आपने पूछा था, क्या नाम है आपका, काशिफ। Now we have the cumulative frequency. They say the group of adult also completed the puzzle, and cumulative frequency diagram is already made, but the frequency is not available. So let's see that how can we find this. We have the cumulative frequency. So it means that reading the table, I can easily get the cumulative frequency. The first one is always 8. Agree? And we can see that already that 100 is touching 8. Yes or no? Because it would be Yes, 10 sir. and it is 8. Let's see 150 will go where. So 150 is going to hit this point, and at that point the answer is 30. So I'm going to write 30 here. Okay, now 200 will hit the point. Ramsha, are you getting this? Yes. Okay, if not, so then feel free to ask questions. Okay, 60 and that point is 70, so this point is 66. So I'm going to write 66 here. So now we have to check 250. So 250 is this line. So it will hit like that here. And let's see, let's zoom in a bit so that we can understand in a better position. So this is 110 and it is 112. Right, Ramsha? And the last one is 300, and 300 is touching 120, so it's 120. Let's reverse the process and find the cumulative frequency. In cumulative frequency we write the first one as it is. Remember that 8 plus what 30 is minus 8 is 30, 28. so that is 22. 30 plus what is 66, it's 36. 66 plus what is 112, so 112 minus 66 is what, 112, 46. it's 46. And we know that 112 plus 8 is 120, right, Ramsha? So that's how we'll complete the frequency table. Easy or not? Yes, sir. Okay, now they say that estimate the median, and median is how much percent? Anyone? Please talk. Middle Me- value. Median is the middle value, and median is how much percent? That's what I asked. 50%. Very good. It's the 50% of the data. So 50%, and total data is 120. So it is 60th value. Right, Kashif? Yes, sir. And Ahmed's 60th value on the graph would be कि 60th value को hit करना है. So this is 60th value. So hit करें. Okay. जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए करें तो पुरानी लाइनें मिटा लिया करें, ठीक है। तो 150, 160, 170, 180, 190, 195 is the median. Yes or no? Yes, sir. Sir, Yes, बच्चे. sir, अगर हमें frequency नहीं given and we have to find the cumulative frequency. तो पहले हमें तो दोनों में से एक चीज तो गिवन होगी ना। अभी इसमें देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हम फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। एग्री? yes, और अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कम्युलेटिव निकालने के लिए तुम्हें पता है फर्स्ट वन को लिखो और ऐड करते जाओ और आखिरी नंबर वही आना चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर। कहता है 55% of the adult took between 125 seconds and this much seconds to complete the puzzle. 55% of the adults हैं। अच्छा, क्लियर हो गया? तो 55% of the adults they are between the 125 and k seconds to complete the puzzle. तो अब जरा समझ डालें कि ये यहाँ पर 55% और 155 पहले है कहाँ पर, पहले ये चेक करें। 155 seconds.
sorry, 125 seconds. Apologies. So 125 is right here. Can you see that? मैं ये फालतू लाइनें जरा मिटा रहा हूँ अब, या मिटाते नहीं है ताकि नोट्स में रहें, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ मैं इस पार्ट के लिए, ठीक है? आई एम यूजिंग ग्रीन कलर। मैं लिख देता हूँ यूजिंग green color. So 125 seconds or k seconds. So 125 is right in the center, right, Ramsha? तो इसका हमने 55% निकालना है। Wait a minute, ना थोड़ा सा भी relax हो जाए थोड़ा सा, ठीक है? Okay, 55% of the adult took between 125 and k seconds to complete the puzzle. First of all, we have to see that how much is lower than that, ठीक है? How much percent is lower than that? So after that, it's 19 value, yes or no? Or 18? It's 18, yes or no? 18 Yes, sir. is 18 out of 120 into 100 is how much? Can you please tell me total? There are 120 girls. So 18 out of 120 multiplied by 100 is 15%. Yes or no? Yes, sir. So 15% plus 55% is how much? It is 70%. Yes or no? Find 70th percentile now. Percentile to check the another answer for that. The 70th percentile is 70% of the cumulative frequency. Yes or no? So 70% Yes, sir. of 120 is what? 84. 84th Yes, value. sir. So 84 को hit कर लें curve के साथ. Hit 84. It's 90. So 82, 84. So hitting that. So I'm gonna check the answer below. So that is what my answer is. So let's see. 200, 210, and 215. So that is what the value of k is. So that is 215. So 215. That is the reason we had 3 marks for that question. Is this clear? बहुत आसान सवाल था, थोड़ा ट्रिकी था बस, खाली कुछ नहीं। 55% आपके उससे बाद स्टार्ट होने थे ना, 125 के बाद स्टार्ट होने थे। Is this clear? तो पहले मैंने देखा कि 125 पे 18 लोग हैं, तो 18 कितना परसेंट बन रहा था? वो 15% बन रहा था रमशा। उसके साथ 55% ऐड किया, टोटल 70 हो गया। तो 70% ऑफ द ग्राफ लेके हिट करके देख लिया, तो मतलब यहाँ पर जो लोग हैं ना दरमियान में, ये अभी जो आपको नजर आ रहे हैं रमशा, बेटा ये नजर आ रहे हैं आपको, ये 70th परसेंटाइल जो भी हम लोगों ने निकाला है, 84th परसेंटाइल नजर आ रहे हैं? जी। दैट यहां से लेकर यहां तक देयर आर 55% पीपल। ओके, इज दिस क्लियर? Yeah. Starting was not the point. Now that is the reason I took some extra time in finding that 15%. Clear? रिकॉर्ड हो गया है, दोबारा देख लेना अगर समझना है तो, ठीक है? चले जी, हिस्टोग्राम पे क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है? आई हैव टू गो समवेयर। सो इट्स अ फ्रीक्वेंसी। सो फिर हमारी बस हमने तकरीबन सब कुछ कर लिया है, तो फिर हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए वी फाइंड आउट द एफ डी, एंड एफ डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय के। Now we have the first pillar available. From 4 to 6, the answer is 2. Let's check. And from this second pillar is this much. So 2, 3, 4, 5, 6. It's 6. So second pillar is also 6. We don't have the third, fourth, and fifth pillar. So we'll find out the value of k first. The first pillar, FD, means height of the bar is 2. So I'll write on 2. And the frequency is 4. We can see that. Class interval is 6 minus 4 is 2 multiplied by k. So 2 2s are 4. 4 is equals to 4k divided by 4 on both sides. So k is Equal to equals 1. to 1. So no need to take the k in the formula now. So now the question is very easy. Now we have to check. Frequency is 9 and the class interval is 0.5. Yes or no? 7.5 minus Yes. 7 is 0.5. So 9 minus 0.5 is what? 18? Yes or no? 9 divided by 0.5 is what? 18 or not? Yes. Okay, so 23 divided by the class interval is also 0.5. 23 divided by 0.5 is 46. Okay, 8 into 3 by 4 is 8.75. अच्छा ये याद रखना, ये इतना ना हो कि आप लोग अब कैलकुलेटर में आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है।
8.75 minus 8 is 0.75. So 18 divided by 0.75 is what? 36 plus 9. 45? Anyone? यार प्लीज यार जल्दी जल्दी करो. 18 divided by 0.75. 24 आ रहा है मेरे पास आंसर. 24. ओके 24 आ रहा है मेरे पास आंसर. ओके 10 divided by, अच्छा 10 minus 8.75 is 1.25, तो 1.25. So 10 divided by 1.25 is 8. ये कैलकुलेटर की मदद से कर लें. अब पिलर लगाने की बारी है. 7 to 7.5 is 18. तो पहले 18 देख लें. 18 को डिसाइड करना जरूरी है कि 18 कहाँ पर है. तो दिस इज व्हाट 18 इज. तो 7 to 7.5 is 18. तो ये मेरा 18 पॉइंट हो गया. तो 7.5 is right here. तो बस यहाँ से आप लाइन लगा लो. ये रूलर से बनाना, ठीक है. ये एक पिलर बन गया. फिर 7.5 to 8 is 46. तो ये हो गया जी 30. ये हो गया 40. 40 के बाद 6 ऊपर, फिर राइट एंड 8 पर आ जाए. फिर 8 to 8.75. 8 to 8.75. 8.5, 8.6, 8.7, 8.75. ओके मुझे 75 मिल चुका है. इट्स 24. तो 24 देख लें जरा. 25 से नीचे होगा यहाँ तक, और अब इसको नीचे लेके जाना है यहाँ तक. Ramsha, is this clear? Okay, 8.7 to 10 is the last one and it is 8. आपको नजर आ रहा है 8. FD के साथ लगाना है. अच्छा FD हाइट ऑफ द पिलर होती है, राइट महमूद. 10 से एक डब्बा Yes, नीचे, sir. दो डब्बे नीचे करने हैं. ये 8 है. जब आपने बना लिया तो पास पेपर पेपर के अंदर आप लोगों ने ऐसी लाइनें लगा देनी है इसके बीच में. अच्छा ठीक है बेटा, क्लियर है. यस और नो. आप शेडिंग भी कर सकते हैं. यू कैन शेड एज वेल. पेपर में काफी टाइम होता है. Now they say Yasser start work each day at 9 a.m. He is paid overtime if he works later than 5:15. Estimate the number of days he is paid overtime during the 70 work days. So he starts at 9 a.m. So he is paid overtime if he works later than 5:15. So we have to check the working hours. So first of all, we have to check that from 9 a.m. to 5:15 p.m. How much time is that? Please use your calculator and tell me what is the answer. टाइम निकालो जरा कैलकुलेटर पे. टाइम कैलकुलेटर पे निकालो. आता है ना सबको निकालना. नहीं है तो मैं दोबारा सिखा दूं. जरा कैलकुलेटर पे डालो. 5:15 PM कौन सा टाइम होता है? इट्स 17:15 राइट और नॉट? 17:15 माइनस 9, बिकॉज सुबह के 12 के आवर में भी सेम होते हैं और 12 आवर में भी. इसका मतलब है 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स. तो 8 आवर एंड 15 मिनट्स से ज्यादा कौन सा टाइम है? जरा चेक करेंगे आप इस पे. अच्छा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 8 आवर एंड 15 मिनट्स. तो अब चेक करते हैं ऊपर. ये वाला तो नहीं हुआ. ये भी नहीं है. ये भी नहीं है. ये भी लेस देन 8 है. 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स. तो 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपके पास. दैट वन इज कंफर्म. ये तो कंफर्म है. अब 8 आवर्स से और 15 मिनट से ज्यादा तो पहले जरा देख लें कि टोटल देर आर 10. सो 8.15 हो जाए. 8.25 हो जाएगा. यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. So 8.25 ना. So 8.25. Everybody please focus जरा. ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, समझ डालें जरा. ये टोटल 8 to 9 है. तो 8:15 का मतलब है 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स मींस 8.25. यस और नो? यस और नो? 25% घंटा और 8 घंटा. यस और नो? तो 8.25 कुछ इधर आता है. यस और नो? देख लें. ये इट इज 8.5 एंड दिस इज 8.25. तो जरा यहां पर मैं एक लाइन ले जाता हूं. ठीक है जी. इस पिलर में देयर वर 18. देयर वर 18. सो 18 के हमने पोर्शंस बनाने हैं. वी नो दैट देयर आर 18 पीपल इन दिस. ओके सो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 7.5. देयर आर 7.5 blocks of for 18 people.
So 18 divided by 7.5 is 18 divided by 7.5 blocks is 2.4 per block. ठीक है जी. And how many blocks I have here? 1, 2, 3, 4, and 4.5. I have 4.5 and 5 blocks. Sorry, one half here and one half here. So 2.4 multiplied by 5. So 2.4 multiplied by 5. So 12. So I have 12 plus the last 10. 12 plus 10 is 22 working days. He is paid overtime. Is this clear, everybody? Yes or no? Yes, sir. हाँ जी. Ahmad, is this clear, Yes, बच्चे? sir. Is this clear? Huraira? Ramsha? Yes, Yes, sir. sir. ओके मेरा बेटा. बेटा इसकी थोड़ा ट्रिकी था, बस पे जरा समझ डालनी थी और कुछ भी नहीं. कैलकुलेटर का यूज से हमने टाइम निकालना था और 8.25 आवर का पिलर देखना था कि कितना होगा. तो मैंने खाली ये देखा कि इधर इस पिलर में 8.75 वाले पिलर में देयर वर 18 पीपल. तो मैंने हर डब्बे का वैल्यू निकाली है. देयर वर 7.5 बॉक्सेस. तो मैंने 18 को 7.5 पे डिवाइड किया तो 2.4 आ रहा है. एंड आई नो दैट आई हैव दीज मच बॉक्सेस हियर. तो मुझे काउंट किए हैं तो टोटल 5 बॉक्सेस बन रहे हैं. आधा इधर है और आधा उधर है और दरमियान में 4 कंप्लीट है. तो 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने एस्टिमेट लगाया कि 12 लोग इस साइड पर हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द पिलर के ऊपर बाकी के 6 लोग हैं. इज दिस क्लियर? तो 12 प्लस 10 करके 22 हमने निकाल लिया. चलें जी. तो ये था हमारा स्टैट्स का ऑनलाइन वर्जन. ये देख लें, पास पेपर का एक क्वेश्चन है इसके ऊपर. द पाई चार्ट समराइजेस द एजेस ऑफ अ पीपल एट अ साइंस फेयर. राइट डाउन द मॉडल क्लास. सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल क्लास? द क्लास विद द ग्रेटर एंगल. यस और नो? यस और नो? 16 to 20 is Yes, sir. मॉडल क्लास. सबसे ज्यादा लोग यहीं पर हैं. There were 90 people who age over 30. So 90 people who age over 30. So over 30 are 54 degrees. Yes or no? Calculate the number of people aged between 16 to 20. Okay, so 16 to 20, they are 144 degree. I don't know the people, so cross multiply. So 54x is equals to 90 times 144. Divide by 54 on both sides. So can you please tell me what is the answer? 90 multiplied by 144. Multiply by 144. Divide by 54. 240. I got 240 as an answer. जी क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? Yes, sir. 240 correct. चलें जी, डन हो गया जी. ये हो गया जी आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट. अब कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं. ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है? ताकि आपको मीन मीडियन मोड निकालना है, पाई चार्ट को बताना है, हिस्टोग्राम छोड़ा हुआ है, एक स्कैटर डायग्राम भी छोड़ दिया है. वो स्कैटर डायग्राम आप लोग खुद कर लेना, ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो चुका है. प्रोबेबिलिटी वाले को छोड़ दीजिएगा. देखिए ये बार ग्राफ बना है, बार ग्राफ से आप मीन मीडियन मोड निकालो, टेबल बना लेना साइड पे और टेबल से कर लेना. ठीक है जी. हिस्टोग्राम भी मैंने बीच में एक छोड़ा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी छोड़ दिया. बस ये आप लोग करें क्वेश्चन, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफी समझ आ गई है. क्लास रिकॉर्ड भी हो गई है.